माही मार रहा है। वेलकम क्या बोलूं, ये तो हम कहेंगे वेलकम चेन्नई सुपर किंग्स। और इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस को किया बाहर। और इस पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ दो सुपर क्रिकेटिंग ब्रेन्स मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जयदीप मुखर्जी, देवसी सेन। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? देवशी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। मुंबई इंडियंस आपने चुनी थी और एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और टूर्नामेंट से भी अब शायद बाहर का रास्ता दिख चुका है। इट 19th ओवर तक भी मेरा आई 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 वाज पुटिंग माय मनी ऑन मुंबई, क्योंकि जिस तरह ओह। से बुमराह ने वो बॉलिंग किया, क्योंकि 11 रन बतौरे, मगर यू हैड समवन कॉल्ड महेंद्र सिंह धोनी। मगर इस हम्म। ओवर में महेंद्र सिंह धोनी मैच जिता रहा है, अनबिलीवेबल। सब क्या बोले। वो जो जडेजा ने मैच ग्राउंड में अंदर आते ही जो बाव लिया ना, टेक अ बाव एम एस धोनी। बिल्कुल Unbelievable बिल्कुल। match, unbelievable. This is truly the El Clasico of IPL. क्या कैसे एक्सप्रेस करेंगे जयदीप इस जीत को? मुंबई इंडियंस ने फाइट अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर क्या हम कहेंगे, बॉलिंग में परेशानी थी। एक टाइम पे अच्छा पकड़ा, ऐसा लगा था कभी मुंबई के खेमे में मैच, फिर चेन्नई सुपर किंग, फिर वापस मुंबई लेके गया। लेकिन एंड में जब तब तक धोनी है तब तक उम्मीदें हैं और तब तक सीएसके है। Harimaji, I agree with you. This was an El Clasico, but not a classic one. Not a one that you really want to see. Both teams not playing at their best, scrapping it out. हम्म। वो जो होता है ना कि when you're not playing well, उसके उनके बीच में लड़ाई चलता है. Obviously, both the teams not at their best, form-wise, team-wise. What they have been in the last 14 years, they are not that. So this is anybody's game. When it goes down to last ball 4, and this easily could have gone to short fine leg. It could have gone a little हम्म। more. Bat का थोड़ा आगे लग जाता तो square leg चले जाते, शायद 2 run होता. So this is as good as anybody's game when it comes down to the last ball, and the one that has a little bit of luck goes through. But what was interesting to see is that I thought that the Chennai's body language was slightly better. Whereas Mumbai also the हम्म। match was looking like they've resigned to the fact that एब्सोल्युटली। it's not their हम्म। year this year. चेन्नई को मुझे लगा that from the body language it seemed like अभी भी हमारे लिए बहुत कुछ है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए. And sometimes that can be the difference between a win and a loss, especially how you approach a game. Both of you are in a position that you've never been. You're not used to being number say last and second last. But in spite that, what you make of it is what makes a team, and that's where I think Chennai had the edge. एज है। और आज जिस तरीके से टॉस जीता था, बॉलिंग का फैसला किया था, मुकेश चौधरी, एक ऐसा नाम जो अब ना सुर्खियों में आ रहा है, अपना नाम बना रहा है। और जो फर्स्ट ओवर होता है ना, वो विकेट टेकिंग ओवर कहलाया जा रहा है। शुभमन गिल को वो फर्स्ट बॉल पे आउट लेना, विराट कोहली को वो 1 रन पे आउट लेना, और आज रोहित शर्मा। देवाशीष, कितना इंपॉर्टेंट होता है पावर प्ले में विकेट्स लेना भी, रन्स भी कम देना। आज उन्होंने 3 ओवर में 19 रन दिए, 3 इंपॉर्टेंट विकेट, जिसमें ब्रेविस का भी 1 विकेट आप जोड़ लीजिए। सो ना केवल वो इकोनॉमिकल थे, विकेट्स भी लिए उन्होंने, लेकिन चेन्नई से शायद चूक हुई, कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन हुई। उन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले, चौथा ओवर डाल Hmm. सकते थे। जी बिल्कुल, हुँ, क्योंकि if you could see कि the ball that he bowled at Ishan Kishan means हुँ, swinging Yorker, means flooring down Ishan Kishan, that to me will stay in the hearts of fans for a long time, because what a delivery it was. And first up the Rohit, the ball that it was initially the ball was swinging a bit, and he utilized the conditions truly. And what a fine Mukesh Chaudhary. But then it's a bit surprising that to give him only three overs, and to हुँ। I don't know why Ravindra Jadeja didn't utilize his full quota. But then I think that ball, the ball to Ishan Kishan will remain with the fans for a long time. बिल्कुल, देखिए मिसकैलकुलेशन तो डेफ़िनेटली हुआ है। डीजे ब्रावो जिसको हम कहते हैं, उन्होंने 4 ओवर्स 36 रन्स 2 विकेट लिए हैं। वो एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो मुकेश के ओवर नहीं पूरे किए, यही गलतियाँ हैं और जडेजा उनसे ज़रूर सीखेंगे भी। लेकिन एक बात बोली है जयदीप देवाशीष ने, कि वो जो बॉल था ईशान किशन को, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आया था जिसमें उनको बैटिंग करते हुए दिखाया, और दिखाया सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर ने उनको यॉर्कर पे बोल्ड किया था। उसमें भी उन्होंने वो यॉर्कर मिस किया। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि यॉर्कर को रीड नहीं कर पा रहे, या जल्दी नीचे नहीं आ पा रहे एज़ अ बैटर? Yeah, it's possible. Sometimes when you're waiting for the length ball, then the Yorker does become a bit of an issue, especially when you're हुँ, expecting it. And I think people start expecting the Yorker only in the slog. And this is something that हुँ, Sunil Gavaskar sir हुँ, always talks about, that if you have a lethal Yorker, why can't you use it in the power play as well?
Somebody like a Jasprit Bumrah, Shami, who can get Yorkers out at will. So why only at the death overs? Why not as a wicket-taking option first up as well? And that is something that we saw. And it's sometimes, some deliveries make it a bowler. It's like Balwinder Singh Sandhu's in swinger to Gordon Greenwich, that you resonate with him. You attach that ball with him, and that stays with your mind forever. This was one such dismissal. Now whenever they talk about Mukesh Chaudhary, they talk about this Yorker, the way it's swung back in. And also he will also get a sense of belonging, that I'm getting India players out. So then I must be pretty good. And as you know, Rima ji, as you play at a certain level, the most important thing for you to is to belong in that level and feel that you belong there. That's the best feeling. Whether it's club, True. whether it's junior cricket, whether it's state, whether it's country for you, you just go and feel that I belong here. It's the problem Hmm. starts arising when you start questioning yourself, that maybe my skill set, maybe I'm not mentally as strong. But once you belong there, once you do well against current Indian players, that is a sense of satisfaction, because you feel that okay, I'm not that bad. I can hold my own, and that makes a huge difference. Hmm. एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, ये थोड़ा पर्सनल है। किस लिए? क्योंकि देखिए धोनी, जिस तरह से देवाशीष ने कहा वो कैसे करते हैं ना हमें समझ नहीं आ रहा। कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल नहीं रहे, Mm. डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल नहीं रहे, सिर्फ आईपीएल टू आईपीएल वो खेलते हैं, कोई लीग भी नहीं खेलते। सामने आपके ऐसे प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं, एक कैप्टन है, एक फॉर्मर कैप्टन है, फॉर्म उनके पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज धोनी ने फिनिश किया, क्या डिफरेंस है? येस, इट इज़ अबाउट माइंडसेट, बट वो टच नज़र आया, वो फिनिशिंग टच, वो कहते हैं ना धोनी द फिनिशर, वो कल भी था, आज भी है और जब तक खेलेंगे तब तक रहने वाला है जयदीप। And he will not play once he's not the finisher anymore. That's the pride of the man. He knows where he will हुँ, call it a day. And so, you said the answer yourself, that, these guys are playing so much of cricket. I read a very interesting article today where some of the greats of India have said that maybe these guys need a break, because हुँ, when you do a lot of everything, it can get to you, no matter how good it is, no matter how much you're fond of it. If you have your favorite dish for 25 days in a row, on the 26th day you will look for something else. So it's a very important one, and it got me thinking that maybe that's one of the reasons these players are so jaded, tournament to tournament, ball to ball, especially the guys who play three versions for India, for them, हुँ, and then they play the Indian Premier League, because this is such a global tournament, and your franchise depends on you, so you feel obligated, as you do playing for your country. So I think, firstly, country is a given, because it's the country, nothing is bigger than that. ट्रू, And then the franchise does so much for you, they depend so much on you. You've made the team, then you're obligated there also. So where do you हुँ, actually take a call and say, okay, I'm going to take a break? So that is a very fair point, because physically jaded, mentally jaded, and हुँ। I don't know if that's the answer, but it could well be. It could well be. It's a point worth pondering over. इम्पोर्टेंट है ये क्या, अब इसका आगे रिज़ल्ट निकलेगा वो तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन यार रिज़ल्ट तो सीएसके के फ़ेवर में आया है देवाशीष, और जिस तरीके से सीएसके ने आज वो धोनी ने जिस तरह से पोलार्ड की वो विकेट को सेटअप किया था। पहले भी हम देख चुके हैं कि पोलार्ड को डीप में कैच करवाना, ये बताता है कि आप किस तरह हमेशा अपने आप को गेम में रखते हैं। पोलार्ड आज थोड़े से सेट होते हुए नज़र आ रहे थे। डेंजरस वो विकेट थी। और उसको आपने ऐसे सेटअप किया यानी कि आप हर बार एक प्लानिंग के साथ उतरते हैं और उसमें भी एमएस धोनी एक नाम है जो हमेशा शामिल होता है। It speaks volumes of the greatness of the man. मतलब MS Dhoni the leader, which he is. हालांकि जडेजा is the captain officially, but I still believe इस टीम में चेन्नई सुपर किंग्स टीम में अभी भी महेंद्र सिंह धोनी is calling the shots. चाहे चाहे हो फील्ड प्लेसमेंट हो, क्योंकि जिस तरह से उसने प्रिटोरियस को वहां एकदम सीधा सा जो फील्ड हुँ, फील्ड Inside फील्ड info, फील्ड प्लेसमेंट रखा था, inside मतलब info, inside info, inside info, inside info. जडेजा ये अच्छा है। अब प्लीज़ देवाशीष, वो या डिस्ट्रैक्ट बट करेंगे, देन आपको होना नहीं है। अब महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फोकस एकदम। एकदम एकदम नहीं नहीं I am really disappointed with the way Mumbai lost the match. Means it's no two ways about it. I still believe Mumbai could have won the match. Jayadev Unatkar, how can he bowl that leg side bouncer when you have that fielder fine leg up? He is an experienced player. He has played so much cricket in domestic cricket, and to bowl that bounce. And where was that Yorker?
He bowled at first half, which Dhoni hit for a six. And I don't know. Maybe Rohit Sharma did something wrong in bowling that 19th over, giving that 19th over to. At the hindsight, I might think so that Jasprit Bumrah bowling that 19th over and keeping that final over for Unadkat, because Unadkat is not. I don't know. He's not that experienced a bowler. When you have someone like a Mahendra Singh Dhoni at the wicket, you should keep your best bowler. हुँ। I don't know. That's the greatness of the man to win the match out of nowhere. मुंबई इंडियंस के True. जो फैन है ना, उनके वो इमोशंस फेस पे नज़र आ रहे हैं और वो आज जॉयदीप रोहित शर्मा के फेस पे भी नज़र आए, रिएक्टिव वो नज़र आए। आमतौर पे उनको कूल एंड काम कैप्टन कहा जाता है, लेकिन ये वो फ्रस्ट्रेशन है। जानते थे कि मैच में कहीं न कहीं तिलक वर्मा की वो इनिंग की वज़ह से थे वहाँ पे, लेकिन जब फील्डिंग में लैप्सेस होते हैं या बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड जब नहीं होती, वो रिएक्शंस बाहर आ रहे थे। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। True. See, also, I think the fact that when you're used to doing well year in, year out, to take this sort of a beating takes a lot out of you. हुँ, So I just feel that just the way that they were playing, just the way that they were going about their business, I just felt that Rohit also is feeling the pressure of the fact that everybody is sort of going to his place. Results used to come on its own. The players performed on their हुँ, own, and that stopped हुँ, happening. So I think he's just starting to feel the pressure, and it's showing because, as Rimaji rightly said, he's a very cool, composed, calm sort of a fellow. And all of a sudden, you can see he's jittery. Even at the press conference the other day, he came out and says, "Awaz tez karo yaar." And anybody who knows हुँ, Rohit knows that he doesn't talk like that. But it is हुँ, getting to him. It's evident it's getting to him. And we've all been through that. जब कुछ डेफिनिटली। काम नहीं हुँ, करता है, and the pressure of leading a Mumbai Indians, the number one franchise, and with हुँ, the owners and supporters and everything on your face, he's hearing a few things coming in, he's hearing a few things going out. होटल के लॉबी में उनका कान पे आ रहा है कुछ उड़ के, so all that gets to you, and especially you feel worst is that you're very you're incapable of doing anything because you're doing everything you can, but nothing is working. It's हुँ। not that you're not. It's not that he's not doing anything that he can and it's not working. कुछ काम हो नहीं रहा है. So then मुंबई इंडियंस के लिए कुछ हो नहीं रहा, फॉर yeah, श्योर true. ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो कोई भी चाहे वो टॉस से आप शुरू करें या चाहे वो आप प्लानिंग से शुरू करें या फिर एग्जीक्यूशन से। कुछ चेंजेस किए थे, शौकीन ने आज अच्छा किया, सैम्स ने आज वापसी की थी, 3 विकेट लिया उन्होंने। सो कहीं न कहीं बिट्स एंड पीसेस में अच्छा करते लेकिन फिर एक बार फेल हुए एज़ अ यूनिट, लेकिन एज़ अ यूनिट क्लिक किया आज सीएसके क्यों इसको बोलते हैं सीएसके इज़ लाइक अ फैमिली। देखिए आज जिस तरह से जॉयदीप ने बैकअप किया था कि भी हाँ, बैक किया था मिचेल सैंटनर को कि वो सही मूव भी है क्योंकि मोइन अली नहीं कर पा रहे हैं, सैंटनर कर सकते हैं। लेकिन आज सैंटनर किया, बॉलिंग में भी इकोनॉमिकल रहे और बैटिंग में भी देबाशीष उन्होंने वो 30 रन्स मारे, 1 डाउन उनको भेजा था और जिस तरह से वो बैट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कैपेबल हैं और उन्होंने वो 25 बॉलों पे जो 30 रन किए, वो फ्रूटफुल साबित हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि ऋतुराज आउट हो गए थे, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट बॉल। इनफॉर्म बैट्समैन फॉर फर्स्ट बॉल चेन्नई सुपर किंग्स, एंड दिस तरह से ही हुँ, टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन. सो हुँ, दैट टू मी, वो होता है ना ड्रेसिंग रूम में एक माहौल सा खड़ा कर देते कि चलो एक बंदा है हु इज जस्ट टेकिंग द अटैक, एंड तो दैट सिग्नल द पॉजिटिव वाइब्स in हुँ, the dressing room. तो and that was a very bold move, क्योंकि हम भी थोड़ा हैरान हो चुका था कि सेंटर एट नंबर 3 when you have someone like an experienced Robin Uthappa या Ambati Raidu, या रविंद्र जडेजा, but then that was a very small little cameo which was a very positive, which had a lot very positive intent. So I think इसी इसी पे मैं यहाँ पे जयदीप के पास आना चाहूँगी। जयदीप यही हम बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद जडेजा ऊपर आएँगे और धोनी ऊपर आएँगे, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन जैसे कि देवाशीष ने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स ये सिलेबस लेके आते हैं, क्वेश्चन्स लेके आते हैं सीएसके। आपके सामने मिचेल स्टार्टनर रख दिया, आपने तैयारी की थी उत्तपा की, रायडू की, जडेजा की, धोनी की, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मिचेल स्टार्टनर एट नंबर 3। I was actually not that surprised. If you remember, I said in the pre-show that he can bat, and I've seen him play some really useful knocks for New ट्रू। Zealand when हुँ, they've been in a bit of a rut, and he has come and stemmed them out in Test matches in white ball cricket. And when somebody's being put at 3, this has been done in the nets. This has been done in practice scenarios. It's not happening all of a sudden. Chennai is known for their planning. Chennai is known for their homework, and they've done हुँ, all this. What this also does, Rimaji and Devashish, is the fact that if he goes and gets a 25 ball 30,
So he's given a little bit of cushioning to the batters later on, and also he's telling the Raidus and the Uttapas that if he can do it, you should be able to do it better Hmm. because you are a Absolutely. recognized batsman. We've sent a left arm spinner who's pretty handy with the bat, and he's gone and get 25 ball 30. You're going to go and get a 25 ball 40. And if you can, two of you will win the game. So it's Hmm. also a mind thing, saying that this is not as tough as you are, as you making it out to be, and this is something that's done, especially when the team is not in form, just to give your ego a bit of an upheaval, saying that okay, go, okay, we see, look, he can do it, you guys can do it too. A little added boost of confidence, which sometimes Hmm. you lack because the team is not doing well, and as a unit they're not doing well. So it could, whatever works. Even if we had got out, you wouldn't have missed him because the batting was there. But something like that also might have given a lot of confidence to the batters coming on later. And he can bat. He can play the big shot. He can bat. Mahendra Singh Dhoni will never put somebody at three who's not capable. He's not a fatka Hmm. guy. Everything is planned. एवरीथिंग वाज़ प्लान्ड और यही तो ख़ासियत है ना सीएसके की। लेकिन मुंबई इंडियंस ज़रूर बाहर हो गया है, लेकिन एक नाम जिन्होंने अपनी प्रेज़ेंस फ़ेल्ट करवाई है हर एक मैच में, चाहे वो एक आधे मैच में रन आउट भी हुए थे, तिलक वर्मा। ये ऐसा यंगस्टर उनको मिला है ना कि बहुत आगे इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिख रहा है। जिस तरीके से आज मुंबई इंडियंस बहुत प्रॉब्लम में थी, कोलैप्स हो रहा था, लेकिन आए उन्होंने जो शॉट्स खेली, जिस तरह से वो अपना हाफ सेंचुरी बनाया, ये खिलाड़ी जानता है प्रेशर कैसे हैंडल करना है, चाहे वो इनिंग बिल्ड करने का हो, चाहे वो एक्सेलरेट करने का हो। देवाशीष, अभी नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में ये खिलाड़ी बहुत आगे जा सकता है। Absolutely, I mean, spot on. He has shown the right temperament, he has shown the right attitude, and the will to fight, and the shot selection. And I think he is a good investment as far as Mumbai Indians is concerned, along with Deval Brevis. Obviously, he didn't click today, but these are the two huge buys for Mumbai Indians in as far as the auctions are concerned. And I think he is proving every innings, every outing, that he has it in him to deliver. When and it's a big stage like IPL. Just imagine 47 for 4 with Surya Kumar हुँ, getting out, and then to take the responsibility and building the innings with the lower middle order batters in the likes of Ritik, Shocking, who is playing his first match, then with Pollard, and towards the end with Sams. So, and this speaks volumes of that temperament of the young guy. So I think in years to come will be an asset for Mumbai Indians, and he with time he will deliver all for MI. ही इज़ डेफिनिटली एन एसेट फॉर मुंबई इंडियंस। इस मैच के लिए एक Yeah, आखिरी just सवाल just जयदीप। yeah, just on that, I would also like to say that this is his honeymoon period. Just like Venkatesh had in the last IPL. So एब्सोल्युटली। he's really good. He's having the time of his life, but things will get tough after this because they will sort him out. They will have plans for him in place, सेकंड and सीज़न। the second season. What do you mean now? And it's always the toughest season. I have no doubt in my mind he'll come through. But this is the tip, the burst is always good. But what follows after that is what maketh the man. And we've seen many of them who've had a really good season and then have not been at their that best because they've been found out. So the jury is still out on that, but I think he has a lot of promise. बिल्कुल और जाते-जाते एक सवाल जयदीप मुंबई इंडियंस के फैन्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए Yeah, I feel for you. इमोशन से भरे पड़े हैं, Yeah, है ना? I feel for you. Just take it like a bad year. Just say that somebody who's won it 5 times can be let go for 1 year. I can understand if this was a franchise which was never won, then I would have said that you can be really hard on them. But a हुँ, team that has given you 5 trophies and a couple of other runner-up trophies, just let 1 year go and they will mend it. They will sort this out. You know, this is really very difficult for you all to take, but keep the faith. Keep the faith. हुँ। क्रिकेट है, कभी जिताता है और कभी सिखाता है, इस हार से ज़रूर मुझे Ji. लगता है मुंबई इंडियंस सीखेगी। लेकिन अब कल की मैच की जाते-जाते बात कर लेते हैं। कल एक बड़ा मैच है, दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दिल्ली कैपिटल्स पिछला मैच बहुत ही तरीके से जीती थी और क्वारंटीन से आए, लगा ही नहीं कि वो होटल में रेस्ट कर रहे थे, लगता था कि प्रैक्टिस कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने वो मैच जीता था, हाई ऑन कॉन्फिडेंस आएँगे। वेन्यू उनका चेंज हुआ है, अब वानखेड़े में खेला जाएगा।
देवशीष, बड़ा ये मैच होने वाला है, इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, स्पेशली आरआर के लिए, क्योंकि ग्राफ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। उनका सामने होगा दिल्ली कैपिटल से, जो स्ट्रगल कर रही है ऑफ द फील्ड, लेकिन ऑन द फील्ड बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। Yeah, and they will go in with the confidence that they had a dominating win against Punjab Kings in the last match. But at the same time, Rajasthan Royals, I think they are again proving to be a side which is over reliant on their top order batters, especially Josh Butler, who is hitting two centuries in the tournament so far. Sanju Samson, again, I would like to reiterate that he needs to be consistent. He's the captain of the side. So, but it won't be easy for Delhi Capitals. Let me put it out. It won't be यही मैं easy for कहने Delhi वाली थी, क्योंकि Capitals. दोनों ही टीम जो अपना आखिरी मैच है वो जीत के आ रही Yeah, है, लेकिन absolutely. एक मैच जीतती है आरआर, एक मैच हारती है, लेकिन पिछली बार की वो हैट्रिक, वो 200 रन बनाए, वो फाइफर चाहल का, फिर सेंचुरी बटलर की, आसान नहीं होने वाला। चाहे Yeah, दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छे से मैच जीता था, लेकिन राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है कल। absolutely. जयदीप। Yeah, I think so. I think this is, Delhi had a really good game. And I think their opponents were not up to the mark, which can happen. But I feel Rajasthan Royals are in a better shape than their opponents Punjab were on that evening. They're playing better. Their bowling is better. They're a better all-round team. And Delhi will have to play well. This is as even a game as we can see in the IPL. That's the best part about it. Any team can beat any team at a given point in time. You play 10% below your capacity and you're going to get rolled over. That's why this league is so competitive and so good, and nobody can predict. But I'm going to have to go with Rajasthan Royals on this, just on their bowling. And because Delhi, I feel, are not playing their full team. If Delhi had their full team with the Marshes and the full bowling attack, Nokia and everything, I would have gone with Delhi. But I'm just going with Rajasthan Royals. They're looking a little more beefy to me. देवशीष, योर कॉल। I would also go with Rajasthan Royals. Not that I would like to differ with Joydinda, but then definitely Rajasthan looks a better side because with the form Chahal is in with Ashwin. They have a decent bowling attack with बॉलिंग Trent अटैक। Bolt, Prasidh Krishna, and Navdeep Saini, and with these two spinners, and also the batters with Josh Butler, Sanju Samson. So I think they looked a well balanced side. It's True, true that they have not been consistent. They have been winning, they have been true, losing, true. ups and downs. But on paper, I would still put my money on the Rajasthan Royals. They look a better side. एंड बेटर बॉलिंग साइड, अगर गुजरात Yeah, टाइटंस के बाद किसी की बॉलिंग साइड अच्छी है या स्ट्रांग है, तो वो आरआर है, क्योंकि उनका जो स्पिन डियो है वो अच्छा करते हैं। अश्विन जो है, उनके True. इमोशंस, एक एक विकेट पे वो रसल का जो कैरम बॉल है ना, हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो आरआर को स्लाइट एज देती है ओवर डीसी। लेकिन मैं तो दिल्ली वाली हूँ, मैं तो दिल्ली के साथ ही जाने वाली हूँ, लेकिन दोनों हमारे जो पैनलिस्ट है वो जा रहे हैं आरआर के साथ। एक बात तो तय है कि जो गेम है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है, वानखेड़े में ये मैच होने वाला है। सो कल आपसे हम फिर मिलेंगे प्री मैच में 7 o'clock। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप वेल। Thank you. Good good night. night. Thank you very much.